Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम सर। Well, I'm Magnet. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I'm fine, brother. Thank you. Yesterday we discussed the different classes of the matter on the basis of magnetism, and we discussed the properties of magnetic lines of force. Today we are going to see how we can magnetize a simple piece of iron. Methods of magnetization. If we go to, now there are two types of magnets. One are naturally occurring magnets. Okay? They are just pieces of metal, iron or steel or cobalt or nickel, and they are naturally occurring magnets. Okay? The other they are artificial, man-made. We're going to see the man-made methods, how we can convert or change a simple piece of ferromagnetic substance into a magnet. I'm sure you people still remember the cause or the reason how a simple piece of metal, why a simple piece of metal behaves like a magnet. What was that cause or reason? Di, two means dipole. Dipole arrangement of atoms, right? Whenever you see, if iron, if we have, let's suppose, a magnet, and we just take an iron nail, and if we just lift the, like the, if we just touch the bunch of nails with the magnet, we can see that a chain of like nails, they are attached with the magnet in this fashion. Yeah. In case of iron. Now, this nail is directly connected with the magnet. But what about this one, or this one, or this one, or this one? The first one, yes, Adi. Good. The first one, it turned into a magnet, and it is attracting the remaining ones. If I just disconnect it from here, what do you expect? What is going to happen with these two? They will fall because the magnetic effect will be no more there. Anyway, okay, good. Shabash. If I just take, you see, with the same diagram, I'm trying to explain steel. If we take steel nails, then what will happen? Okay? You can clearly see the difference between the two. Iron nails, quite a long chain, whereas steel nails, very few. Showing that steel, it turns into slightly, comparatively weak magnet, right? If I just disconnect this one, what do you expect? What is going to happen with this nail? It will remain there. Okay? Indicating that here, in this case, it turns into a permanent magnet. Steel turns into permanent magnet. Whereas iron, strong, weak, weak, but this is strong, but temporary.
ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? All right. So we want to make a permanent magnet. So which material you are going to use? Iron or steel? Steel, sharp. So we are going to consider steel to make permanent magnet. Single touch method. In single touch method, what we do is we just place a permanent magnet on a table. Let's suppose you have a piece of iron which you wanted to convert into a magnet. What we are going to do is we are going to slide this. Yeah, we are going to slide this piece of iron on this magnet and we are going to lift it. And then we are going to move it like this. So really side at the Yeah. Usually, होता ये है कि in a single touch method हम इसको ऐसे नहीं रब करते, रब हो गए जैसे वो friction के लिए हम करते थे. There's a pattern. We have to slide it like this, and we move ऐसे ऐसे. ठीक है? हाँ. और ये नीचे मैग्नेट है. ये रखो. वो जो स्टील जो है वो नीचे वाली चीज की हुई है। हाँ, उसी का एक एंड, दोनों एंड की यूं नहीं, एक ही एंड ऐसे करके. This is called single touch method. There are few questions which I am expecting from you about this method. Why we are sliding it and then we are moving it in this circular fashion? Why? ऐसे भी तो आप कर सकते थे इसको. जी, people online, Amna, Ammar, Bakhtiar, Adia, Umar Irfan, Usman and Khadija, any one of you, just tell us why we are sliding this simple piece of steel. Are there any like certain things which are just coming out from this North Pole? You remember that? Yesterday we talked about them. What are they? What do we call them? Thank you very much. Magnetic lines of force. Magnetic lines of force, they emerge, they come out from North Pole and they move towards South, outside the magnet. ऐसे तो? So we are actually tracing the path of a magnetic line of force. Right? So this is the fixed pattern or fashion. Now, after some time, after like some strokes, this thing will turn into magnet. Okay, I'm just making it clear. This end rising up. So what do we expect? What about the polarity? Hanji, what about the polarity of this thing? Which side will be North Pole and which side will be South Pole? Polarity is very, very important, isn't it? Because we have to mark it, ना? और मार्क करने के बाद हमने साबिक को देना है, कंपास बना के इसको डेजर्ट में भेजना है हमें. अगर हमने पोलैरिटी इसकी गड़बड़ कर दी तो ये तो चला जाएगा, रह जाएगा, घूमता फिरेगा. सो ये एंड कौन सा होएगा, ये एंड कौन सा होएगा? नीचे वाला नॉर्थ होएगा. ओके, somebody say north. सब नॉर्थ कह रहे हैं नीचे वाला. There must be a good reason why you are selecting north. Okay, शाबाश. चलो ठीक. South के कोई any people who think it will be south? होगा क्यों? यही तो मसला है, यही तो पूछना है. People online सिग्नल्स ड्रॉप होना शुरू हो गया, पब्लिक भागने लग गई. कोई बात नहीं बेटा, बैठे रहो. अगर नहीं भी आता तो रुके रहो, सुन तो लो.
फिर चले जाना। ऑलराइट, सम पीपल से ये साउथ में, नॉर्थ और साउथ। दिन नहीं होगी तो रात तो होगी ना जी। आदिल, व्हाई यू थॉट इट इज नॉर्थ पोल दिस साइड? दिस मैं लिख दूं इसके ऊपर नॉर्थ, लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने नॉर्थ। व्हाई डू यू थिंक सो? सर जब इसको ले जाते हैं नॉर्थ साइड पे तो उसको दूर ले जाते हैं साउथ साइड के पास ले जाते ओके, हैं नॉर्थ के पास। तो he thinks कि जब इसको यहाँ से दूर away, we are taking it away, this is north. Anybody else? South का कोई pro south? Sir, may I tell the answer? Sure बेटा, Sir, ये साउथ है। thank you very much. ये south है, आदिल ये south है वाकई। All right, I'm not telling me the reason why south, which is correct by the way. Sir, क्योंकि opposite से attract होते हैं। Thank you very much. Opposite pole create होता है, हमेशा याद रखना है। You remember? Opposite poles they attract each other. तो यहाँ पर कैसे होएगा? Similar या opposite pole? जिस end से you are lifting it, वो end इसका opposite create होगा। पर जो साउथ होगा वहाँ भी साउथ की होगी। Any south वहाँ पे नॉर्थ कैसे होगी? तो बेटा यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जा रही है तो किधर जा रही है? किधर? ठीक है, तो ये ऑपोजिट पोल क्रिएट होता है। अभी तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर दूं, हौसला हौसला, जा नहीं रहा। लो जी, आई गॉट अ मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये बीच में से मैंने इसको तोड़ दिया, बल्कि यूं कर दूं। लो जी, दूसरो what's going to happen today? What about this pole? ये साउथ में If I just break this magnet into half, Heather, what do you think? What's going to happen? This side will remain south? No. What do you think? ये साउथ रहेगा, ये और ये पूरे का पूरा साउथ, और ये पूरे का पूरा सर वो जो साइड में ये पूरी नॉर्थ होगी। थोड़ा मैं और लंबा कर दूँ ताकि इजी जस्ट समझ लें। तो जी ये मैग्नेट था बहुत बड़ा सा, और आदिल और कावड़ दोनों लड़ पड़े, सर हमें अलग अलग कर दे, मैंने काट दी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आदिल के पास कौन सा पीस गया? साउथ। और अब्दुल्ला के पास अली, ठीक है? क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? नॉर्थ साइड है नॉर्थ साइड है, उसके साथ साउथ इसके साथ साउथ बन जाए, नहीं इसके साथ इधर इधर साउथ बन जाएगा और आगे पूरी पूरी। और अगर मैं इसको भी काट दूं, एक नंबर पर साउथ में ज्यादा हो जाएगी, नया मैग्नेट बनता है। ये क्या हो जाएगा? और ये बिल्कुल ठीक, शाबाश। आप जिसको और ब्रेक करते जाएंगे और करते जाएंगे, छोटे से छोटा, तो क्या होता है? पोलैरिटी विल बी देयर। हैदर, यू रिमेंबर दैट बायपोल थिंग? ये एक पोल है व्हिच इज पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये आगे आने से टीचर्स टू दिस एटम द टाइनीस्ट थिंग, तब तक ये पोल्स बनते थे। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब ये वन इज नॉर्थ, द अदर इज साउथ। ठीक है, याद रहेगा। तो बेटा यहाँ पर कौन गया? साबित किया। साबित यहाँ पर कैसे ऑटोमेटिक नॉर्थ बन गए? देख रहे हो, ऑपोजिट पोल क्रिएट हो रहा है। The same case happens here. When you are lifting it, the opposite pole is being created here. वहां पे क्या तो होने देना यार, तुझे दिल आ रहा है यहाँ से देखना है हमें सिर्फ। ऑलराइट, लेफ्ट से देखना जब जिस एंड से आप लिफ्ट कर रहे हो उस एंड का ऑपोजिट पोल क्रिएट। राइट, एक और सवाल मेरा, अगर समझ में आ गया आपको। वन मोर क्वेश्चन, इफ आई हैव टू पीसेस ऑफ मैटर, A, the other is B. ठीक है, I went to Ali's shop and he said, sir, ये दोनों मैग्नेट्स हैं, बट हमने ना इसको वो नहीं किया, मार्क नहीं कर सके। How can I check that both of them they are magnets? सर पहले एक साइड को हम चेक करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगी? ए को ऐसे रखा कि एक तो वहां पर चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स। 3 पीस है, 3 में से 2 आयरन, एक आयरन है सिंपल, और 2 मैग्नेट्स हैं।
A, B, C में से one of them is simple piece of iron and the other two are magnets. ठीक है जी. So how you can going to identify them? आप नीचे बाकी को सोच ले. सोच नहीं. दो इनमें से मैग्नेट्स हैं और एक सिंपल पीस ऑफ आयरन. दिस टाइम आई एक्सपेक्ट कि जो ऑनलाइन पीपल है उनमें से कोई अदर देन आमना कोई और ब्रेव बच्चा मुझे चाहे रॉन्ग आंसर ही दे, बट डू टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग. टेल मी योर स्ट्रैटेजी, हाउ यू आर गोइंग टू चेक इट, व्हिच वन ऑफ देम इज सिंपल पीस ऑफ आयरन. Sir, if it would be iron, then it would be attracted by both the magnets. But if they are two magnets, so they will on one side when two poles, opposite poles, two like poles will come in contact with each other. They will repel each other, so we can identify that it is a magnet. I was expecting this from you, Adya. Excellent. Shabash. Very well done. कोई और बच्चा? I'm sure बाकी बच्चों को समझ नहीं आया. But Adya, absolutely right. Excellent. चलो जी बाकी बच्चे अब तो पता भी लग गया. Come on. नहीं आप तीनों नहीं. ये जो अली बता रहा है ना ये बताया. Tell us please. What do you think, Ali? How we can identify that piece of iron? The odd one. It's better to wear the mask. उसमें से पता नहीं चलता कौन बोल रहा है. All right? Yes, Ali, come on. दो मैग्नेट्स हैं और एक स्टील है. Yeah. एक तो आयरन है. Iron, steel, nickel, cobalt कोई भी, but that is not a piece of magnet. That's simple magnet. हम चेक कर लेंगे कौन अट्रैक्ट करता कैसे चेक कर? है. पास में अट्रैक्शन होगी ये सब. सर अट्रैक्ट ये भी अट्रैक्शन होएगा, ये भी अट्रैक्शन होएगा, ये भी सब कुछ तो अट्रैक्शन हो रही है. सर लेकिन जो है वो पर नहीं रहेगा. Attraction is not a. सर मैग्नेट की लाइट पल्सन करेंगे. Thank you very much. वो देखा ना वो आमना ने भी आप बता. Repulsion is the sure test. Repulsion. Similar poles क्या करेंगे? Repel. इतनी जोर से बताने की कोशिश कर रही थी आप. हाँ आप तो बता. Repulsion. So repulsion is the sure test that these two pieces of metal they are magnets. ठीक है. Similar poles of the two magnets they are going to repel each other, and that is the test of magnets, right? ठीक हो गया. Attraction तो हर चीज attract होती है. So attraction is not a sure test. Repulsion is the sure test for magnets, right? ठीक है. समझ आ रहा है? Single touch method समझ आ गया? Any questions? आगे चलें. Okay. Iron nails ये भी मिटा. मैग्नेटाइज करने में दोनों चीजें तो होता है. अभी तो 70 मैग्नेटाइज करने के तरीके हैं. एक दो थोड़ी ना, तो सब बाइक में पड़े हुए हैं. तीन है. देखो तीन ही प्रॉब्लम. दिस इज सिंगल टच, तो डबल टच भी होगा. डबल टच में जो हाँ बुक में पढ़ा था और फिर भूल गए. दैट इज द डेथ ऑफ नॉलेज. जब आप भूल जाते हो. नॉर्थ साउथ. बेटा डबल टच में यू कंसीडर वी टेक टू पीसेस ऑफ मेटल. Okay, two pieces of metal, and they are slided right from the center to the sides. In the opposite directions. दोनों पे कट. ऐसे कट. All right. और वो जो चीज है मैग्नेट that is placed underneath, उसके ऊपर आप स्लाइड कर रहे हैं इसको. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो बताओ मुझे यहां पर कौन सा पोल बनेगा.
इस metal piece develop to reach here That's how. So, और इस metal piece क्या बात very intelligent. Online people, is it right? No, sir. लो जी हमने क्या दिया नो से बाकियों का क्या ख्याल now there's a law. चुप करो ना यार उनको भी तो they are also there. हाँ जी which one of them will be north right or left कोई बात नहीं फातिमा I guess right side पे साउथ की जगह नॉर्थ नहीं बनेगा. It is now. शाबाश ये नॉर्थ हो जाएगा वेरी गुड ठीक है This अब बोलो बोलो जी सही है मेरा सर. ऑलराइट गुड शाबाश बिकॉज बेटा इन दोनों मेथड्स में सिंगल एंड डिवाइडेड टच में डबल टच में इसको डिवाइडेड भी कहते हैं और डबल टच भी कहते हैं ठीक है डिवाइड हुआ है ना आप तो इसको डिवाइडेड टच या डबल टच बोथ कहते हैं सिंगल और डिवाइडेड टच में बोथ में द पैटर्न रिमेन्स द सेम the end from which the magnet is being lifted that over there opposite pole is created ठीक है and you were able to identify that I'm glad that you understand good great शाबाश अच्छा इससे ना तो बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स भी बनते बस दरमियाने से मैग्नेट जैसे समटाइम यू आर वर्किंग विद अ स्क्रू ड्राइवर तो नेल्स उठाने के लिए ना आपको ये जादू था तो आप मैग्नेट के ऊपर इसको इस तरह से क्यों करके वो करो वो अक्सर जो दूसरे मिस्त्री होते हैं ना वो ऐसे से रफ कर रहे होते हैं ऐसे नहीं ऐसे करके पढ़े लिखे होंगे ऑलराइट तो इट विल टर्न इनटू अ बेटर मैग्नेट तो आप उससे आराम से नेल उठा के फिक्स कर सकते राइट समटाइम्स यू रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके लिए क्या तरीके हैं सर वो एक एसी का वो करते हैं क्या नहीं सर वो मशीन होती है. मशीन होती है उसको पकड़ लेते हैं फिर क्या होता है उसमें नहीं करंट सर से के अंदर एसी करंट रन कर दिया फिर एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्ट चला देंगे इसके अंदर सोलेनॉइड होता है. सोलेनॉइड उसके अंदर मेरी भी तुम ना फिजिक्स ठीक रहा हो सोलेनॉइड 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 क्या चीज होती है एक वायर का स्प्रिंग एक स्पिल बनी हुई है जो होती है ना बाइंडिंग आपकी होती है यार ये इसमें पहनी हुई है जैसे वो हेड बैंड यस जस्ट लाइक दैट that we have here. सही है. ऐसा रहेगा सही है. wire yes okay this is called a इस तरह से उसके अंदर लगता है. solenoid yes इस स्ट्रक्चर को हम solid we call it solenoid शाबाश ये वाला this one इसमें आप ऐसे मेटल का पीस रख देंगे इसके अंदर सेंटर में राइट now we are just placing a piece of steel in it a bar steel bar okay इसके अंदर ये रेड वाला steel bar जी we are connecting it with Sadiq DC से हम इसको कनेक्ट करेंगे AC से नहीं करेंगे DC से कनेक्ट करेंगे this thin long is the positive terminal of the battery thick and short is the negative terminal of the battery ठीक है and we are providing it the current all right अब कुछ क्लियर ये वायर उसके बैक से भी जा रही है ऑलराइट ओके we have just placed the steel bar in this solenoid and we have provided it current the more current you will provide to this bar
more stronger magnet it will turn. Why? Sawal is again why? The hint which I am going to give you is this source of current. What do we call this source? AC or DC? Why do we call it DC? DC is actually direct current. What is direct current? And there is another current which is called AC, alternating current. All the batteries and the cells, they provide DC current. याद रखो, गाड़ी की बैटरी, टॉयज में जो सेल डलते हैं, सारे के सारे, they all provide DC, direct current. And ये जो जनरेटर या वाटर सप्लाई, मेन सप्लाई, उन सब में AC है, ठीक है? अच्छा, इसमें we just call them AC and DC on the movement of the electrons. DC में करंट होता है वो खत्म हो जाता है। किसी में भी नहीं खत्म, इलेक्ट्रॉन्स कभी खत्म होते हैं। ऑलराइट, बोलोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट इन बोथ द व्हाट इज करंट, थोड़ा सा मुझे हट के बताना समझाना पड़ रहा है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज करंट? फ्लो, ठीक है? वाटर करंट्स, यू माइट हैव रेड देम इन ज्योग्राफी। वाटर करंट्स, दे आर द फ्लो ऑफ वाटर, right? Air currents. So simple current is electric current, and in electricity, what is that which can move? The protons, the neutrons, which are in the nucleus? No, they cannot. Only the electrons. In DC, direct current, like the batteries, electrons move straight in the circuit. This circuit is actually the path for the movement of electrons. Just like soldiers, they move forward. यहाँ से चलेंगे, they will move on, and from there they will come back to the battery. Okay, so they will cover the entire circuit, and then they will come back. With that's why we call it direct current. अब आप बताओ ना, सारी बातें मैंने बतानी। What do you think? What is AC current? Alternating current. ओहो, AC होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से बताओ। सर आगे से आगे आगे भी या ये कम ऑन आमना फ्लक्चुएटिंग करंट। फातिमा शाबाश, फ्लक्चुएटिंग, गुड गुड। आपने देखा वो आजकल जैसे फ्लड्स आए हुए सारी जगहों पे, इस तरह से ये जब भी डिजास्टर इस तरह का आते हैं, वो अर्थक्वेक वगैरह, तो ऐसे एक हम लाइन से बना लेते हैं, एंड वी जस्ट पास ऑन द राशन या जो भी चीजें टू द नेक्स्ट, और वो अपनी जगह सेले वगैरह लेके वो आगे पास करते हैं। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं राइट से और लेफ्ट पे दे रहे हैं। आर दे मूविंग? दे आर जस्ट vibrating to and fro. That is called alternating. So in alternating current, electrons actually they vibrate around their position, and they pass on what? Energy. With what charge? They pass on energy. Battery में क्या खत्म हो जाएगा? Electrons खत्म हो जाएंगे या energy खत्म हो जाएगी? Energy. So they are carrying the bag of energy with them यहाँ से, and they are taking that energy to the source. बल्ब में, पंखे में जहाँ पे, और यहाँ पे they just pass on the energy to the neighboring, और खुद यहाँ से लेते हैं। Alternating and direct current समझ में आ रहा है? अपने नोट्स बना लो बेटा, याद रखने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज करंट, उसमें ये काम आएगा और मैं पूछूंगा भी आपसे। डायरेक्ट करंट सिंपल in a particular direction, in one direction, और उसमें क्या करते हैं? They vibrate around their mean position like a pendulum. Sir, in DC, the electrons move around the circuit. Yes, they actually move like soldiers.
They move from one point, from one terminal, they cover the entire circuit, and then they come back to the battery. Okay? So AC का vibration electron. हाँ, to and fro motion होता है. चलो अभी इतना समझ लो, बाकी डिटेल्स हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा. ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब अगर हमने इसको दे दिया डीसी, तो ये इसके अपने एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी तो खास एक साइड पे हो जाएगी, बिकॉज ये सबकी डायरेक्शन एक तरफ है. तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सर्किट, इस मेटल के अपने भी इलेक्ट्रॉन्स और वो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी ना, तो इट विल टर्न इनटू अ मैग्नेट. तो मोर स्ट्रॉन्गर करंट हियर, मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, राइट? अब अगर एक अच्छा खासा मैग्नेट बना हुआ हो साथ, और उसको मैं एसी दे दूं करंट, एसी कैसा होता है? एसी ऐसा होता है. सिंबल ऑफ एसी इज, ये सिंबल है एसी. इसमें कोई पोलैरिटी, आप नेगेटिव पॉजिटिव भी डिटरमिन कर सकते हैं. गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड इज पॉजिटिव, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव. वो एक सेकंड में 50 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं. तो कौन सा वाला पॉजिटिव है इसमें से टर्मिनल? वाला. ठीक है? इट्स जस्ट द सिंबल ऑफ एसी सप्लाई, एसी. ऑलराइट. अब इसलिए अच्छा खासा मैग्नेट बना हुआ है. क्या बने हुए थे इसमें? इस तरह से पोल्स बने हुए थे. ये एटम्स की अरेंजमेंट थी, और ये मैग्नेट आपने इसको रख दिया एसी में. अब एसी में क्या हो रहा था? इन बेचारों को मुंह इधर जा रहा था, और अगले टर्म में इनका मुंह उल्टा भी हो रहा था. और कितनी देर में? इन अ सेकंड 50 टाइम्स. इधर से लग रही थी, उधर से लग रही थी. तो थोड़ी देर में ये मैग्नेट रहेगा, ये तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. तो एसी यूज करते हैं हम फॉर डीमैग्नेटाइजेशन. एसी फॉर डीमैग्नेटाइजेशन, और एसी डीसी यूज करते हैं फॉर मैग्नेटाइजेशन. समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा सा ही फर्क है. साथ एक तो काम खराब हो जाता था हमारा, इसको हमने एसी में रख दिया. तो मेरा मतलब होगा, मैं समझ गया था तुम्हारा मतलब. तमाम बच्चों को हमारा सारा काम खराब कर देते. ठीक है जी. तो ये बेटा 3 तरीके थे. ये by providing DC current in a solenoid, we can convert a steel bar into a magnet. अब demagnetization के methods क्या हैं? Demagnetization. Demagnetization. एक तो ये हो गया. Place that magnet in a solenoid carrying AC current. दूसरा, second method, throwing or hammering, hitting, throwing, and hammering. अक्सर लड़कों को शौक होता है ना, लैब में जाते हैं, कोई ना कोई चीज तोड़नी है, फेंकनी है, ऐसे खराब करनी है ना. यस. तो मैग्नेट को 2 मरतबा नीचे फेंक दो और खत्म, सीधा हो जाएगा वो. एक्चुअल में वो जो डायपोल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है, उसको आप डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा. डायपोल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, 2 पोल बनते हैं. हिटिंग, थ्रोइंग. हिटिंग के अलावा इसको हीटिंग भी कह सकते हो. ये दिस इज द थर्ड मेथड. हीट करने से. हीटिंग से क्या है? हीट करेंगे तो सीधा हो जाएगा, तबीयत सही हो जाएगी उसकी. राइट. अब ये 3-4 तरीके हैं जिनसे हम मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करते हैं. तो ये बड़े खतरनाक तरीके हैं साथ ही. इफ यू आर जस्ट throwing it or hammering it or hitting it या heating it or
let's say get an AC influence, so the demagnetizes it. How you can store the magnets? अगर ये दो आपके पास बार मैग्नेट्स हैं जिनको आपने देख रहे हो, इनकी पोलैरिटी भी डिफरेंट है, नॉर्थ साउथ। तो अगर इनको हमें सेव करना है तो कैसे करें? हाउ वी कैन कीप देम, how we can store them for a long time. We'll place them parallel to one another. We'll place them side by side. As the north, ये south, ये south and north. ठीक है बेटा? And we will just place soft iron piece here. एक सॉफ्ट आयरन का पीस इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और एक सॉफ्ट आयरन का पीस इधर कनेक्ट कर देंगे। दिस इज सॉफ्ट आयरन पीस, ऐसी मेटल का सॉफ्ट आयरन का। फायदा क्या होगा इस तरह से प्लेस करने का? इससे और ऐसे हम इनको लटा रही हूँ करते चल गई नॉर्थ एंड साउथ, और ये भी सारे नॉर्थ इकट्ठे जाते हैं, सारे साउथ इकट्ठे जाते हैं। ऐसे भी तो कर सकते हैं इन अ बॉक्स। रिपेल करते करते लड़ते 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 क्या हो जाएंगे? दोनों ही घायल। ठीक है, बोथ सिमिलर फोर्स दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, सो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर इन अ constant repulsion phase. So in the magnetic effect of these two magnets will turn weaker and weaker gradually. In this case, magnetic lines, they will flow in a circle. Constantly they are moving in a circle. ठीक है? So they are complementing each other. यहाँ पे वो contradict कर रहे हैं, repel कर रहे हैं. They are complementary. So this is the way you can keep or store the magnets for a long time. Any questions in today's session? With this, we have just concluded the magnets. We are done with the magnets. Tomorrow, we are going to start static electricity. All right? And within this week, we are going to finish or complete static electricity. So on Friday, remember, I'm going to give you two topics for a test, like magnets and static electricity. Tomorrow, it's another important session. Don't get absent. Okay? Thank you very much. If you got any questions, I'm here to answer them. And if there are no questions, we are just done with the session. Thank you. Allah Hafiz, beta. Allah Hafiz, sir. Okay, beta. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, beta. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, beta. No questions? Okay. जो फिजिक्स